everyone. Good evening. Welcome to our today's session, Drug of the Day. Today we'll discuss the drug Omeprazole. So, what is the use of Omeprazole? Where does the Omeprazole is used? Okay, Omeprazole कहाँ पे use होता है? Peptic ulcer में use होता है, right? मैंने पढ़ा है. We know that Omeprazole is used in peptic ulcer. So today we are going to discuss that about the drug Omeprazole. So before to starting with the today's session, if you all not gone through our previous videos, then go through our YouTube channel Dharmesh with the GPAT and go through our previous videos. So let's start with our today's session. So first we will discuss about what is peptic ulcer. First we should know, right, what is peptic ulcer. So peptic ulcer occurs in stomach and duodenum, which gets exposed to pepsin and gastric acid. पेप्टिक अल्सर स्टमक और डिओडेनम में होता है, राइट. वो किसके वजह से होता है? जब वो स्टमक और डिओडेनम पेप्सिन और गैस्ट्रिक एसिड को एक्सपोज होगा तब होगा. तो उसके बाद पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ये तो समझे कि डिओडेनम और स्टमक में होगा. और वो कब होगा? जब पेप्सिन या गैस्ट्रिक एसिड के कांटेक्ट में होगा, मतलब ज्यादा एक्सेस में होगा जो उसको हार्म करेगा स्टमक और डिओडेनम को, राइट. तो पेप्टिक अल्सर ऑकर्स ड्यू टू, बट अब ठीक है, बट वो ऑकर्स क्यों होते, कैसे होता है पेप्टिक अल्सर? occurs due to imbalance of aggressive and defensive factors. ये aggressive और defensive factors क्या है? Aggressive factors include that pepsin and gastric acid. Okay, now pepsin और gastric acid आएगा. इसका मतलब क्या है कि एग्रेसिव फैक्टर्स में हमारा पेप्सिन और गैस्ट्रिक एसिड आएंगे, और डिफेंसिव फैक्टर्स में व्हाट विल इंक्लूड? इन डिफेंसिव फैक्टर्स इंक्लूड्स म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स व्हिच डिक्रीज द और प्रोटेक्ट्स द stomach or duodenum from the getting peptic ulcer, right. Those that protects the lining are the defensive factors, which includes bicarbonates, mucus lining, right. And the aggressive includes pepsin and gastric acid. So imbalance of these aggressive and defensive factors will leads to peptic ulcer. Why? अगर समझो पेप्सिन और गैस्ट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया तो इट विल लीड्स टू पेप्टिक अल्सर. इफ ये पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक एसिड आर लाइक नॉर्मल इन कॉन्सेंट्रेशन, बट डिफेंसिव फैक्टर्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो भी कंपेयर टू डिफेंसिव फैक्टर्स पेप्सिन और गैस्ट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, राइट. तो उसके वजह से पेप्टिक अल्सर होगा. एंड द सेकेंड इज हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ अल्सर, राइट. वी ऑल नो हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन से पेप्टिक अल्सर होता है. हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन क्या है हम लोगों ने सुना, राइट. फर्स्ट सो हम लोगों ने देखा कि पेप्टिक अल्सर के दो मतलब मेन कॉज है कि इम्बैलेंस होगा, एक तो एग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर्स में, एंड द सेकंड वन इज हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन. सो लेट्स सी नाउ. Gastric parietal cells secrete hydrochloric acid due to stimulation of H plus, K plus, AT plus proton pump. Right? We heard about this proton pump. जो स्टमक में parietal cells होते हैं वो लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, क्योंकि उसके जब वो विद द हेल्प ऑफ H plus, K plus, AT plus proton pump के हेल्प से. तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके, तो बिकॉज ऑफ दैट in the treatment of peptic ulcer we also use H plus potassium ion का ATPase pump proton, जो proton pump है उसके inhibitors भी use करते हैं, right. So is why? Because the parietal cells secrete hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस होगा तो अब अल्सर बनता है ना, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं. And so let's see the symptoms of peptic ulcers. Pain in the chest or upper abdomen, heartburn, indigestion, and abdominal discomfort. These are some of the symptoms of peptic ulcers. Okay, so we have seen the peptic ulcer. What is peptic ulcer? Where does it occur? What are the causes and the symptoms of peptic ulcer? Right. So we get an idea about the peptic ulcer. So let's now see about the proton pump inhibitors. Okay, what are proton pump inhibitors? How they work? Let's see. So proton pump inhibitor, that is PPI, binds irreversibly inhibits
H plus K plus ATPase pump in gastric parietal cells. प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स इनिबिट तो करते हैं H plus K plus ATPase पंप पर कैसे irreversibly inhibit करते हैं. Fine. So this is the important part that it inhibits the pump, but it inhibits irreversibly. So let's see. PPAs are prodrugs and active moiety is sulfonamide. मतलब क्या PPA सारे PPA वो क्या है वो prodrugs है. Okay, and that active moiety उसका active moiety क्या है sulfonamide is the active moiety of PPAs, and PPAs are weak bases which degrades in gastric acids. Okay, जो PPAs है वीक बेसिस है, उनका नेचर जो है वीक बेसिस के लिए वो गैस्ट्रिक एसिड के पीएच में डिग्रेड होते हैं. सो दे आर गिवन इन एंटेरिक कोटेड फॉर्म में देते हैं. पीपीएस के एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आते हैं, राइट. वो क्यों होते हैं? क्योंकि पीपीएस आर वीक इन वीक बेसिस, सो दे डिग्रेड इन गैस्ट्रिक एसिड. बिकॉज ऑफ दैट वी गिव पीपीआई इन एंटेरिक कोटेड फॉर्म. ओके, सो पीपीएस एंड पीपीएस हैव शॉर्ट हाफ लाइफ. मतलब उनका जो टी हाफ है, शॉर्ट हाफ, उनका जो हाफ लाइफ है वो बहुत शॉर्ट होता है, बट कैन एग्जिबिट एसिड सिक्रेशन फॉर मोर देन 24 hours ड्यू टू इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन पंप. ओके, पीपीएस का हाफ लाइफ शॉर्ट होने के कारण भी वो जो एसिड का सिक्रीशन है वो मोर देन 24 hours तक इनहिबिट करके रखता है. व्हाई? बिकॉज इट इज irreversible inhibition of proton pump. We have discussed, right, that PPAs irreversibly inhibit the proton pump. So because of that, we PPAs instead of having PPAs half life short, and then also it shows its action for more than 24 hours. Okay, so PPAs के बारे में भी पढ़ा हम लोग ने, like पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़े. तो अब let's move to our today's drug, that is omeprazole drug. So omeprazole is a prototype member of substituted benzimidazole which inhibits the proton pump. Okay, so जो omeprazole drug है वो prototype member है. Prototype member है मतलब क्या होता है? It is the first drug of this classification, that is the substituted benzimidazole that inhibits the proton pump. Let's see the structure of omeprazole. See, this is the structure of omeprazole drug. We can see this is the benzimidazole part. Okay, this is the benzene and this is the imidazole ring, so it is called as benzimidazole, and this is the methyl sulfonyl. See, this is the methyl group and this is the sulfonyl. Together it is called methyl sulfonyl, and this is the pyridine ring and this is the methoxy groups. This and this are the methoxy groups on this. Okay, so this is the structure of the omeprazole drug. Here we can see the benzimidazole, methyl sulfonyl, pyridine, and methoxy groups. Fine. So let's see. Omeprazole only inhibits proton pump and have no anticholinergic and H2 blocking action. इसका मीनिंग क्या है कि लाइक सम ड्रग्स रहते कुछ ड्रग्स रहते हैं ना कि प्रोटॉन पंप पे भी एक्शन दिखाएंगे और दूसरे रिसेप्टर्स या इस पे भी एक्शन दिखाएंगे, क्योंकि उसके वजह से और साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं. बट ओमेप्राजोल और पीपीए ओनली इनहिबिट proton pumps. Okay, and it does not show any action on anticholinergic or H2 blocking. So because of that we have the advantage over others which show mixed actions. Okay, so omeprazole is inactive at neutral pH. This is the important part, that omeprazole is inactive at neutral pH and active at acidic pH. Okay, it's right, because omeprazole we have seen कि omeprazole या PPA जो भी होगा वो प्रो ड्रग है और उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा बॉडी में जाके, राइट. सो बट ओमेप्राजोल या पीपीएच जो भी होंगे वो न्यूट्रल पीएच में एक्टिवेट नहीं होंगे. To activate them we need acidic pH. Okay, so they are inactive at neutral pH and they are active at acidic pH. So so to show the action of PPS we need to it in acidic pH, but if the acidic pH is like too high, around 1 or something, because the stomach acid pH is too high, right? So in that, at that pH it will get degraded. So because of that they are given in enteric coated form. So let's see now the mechanism of action of omeprazole.
Fine. We have discussed about the drug omeprazole. Now let's see the mechanism of action of omeprazole. See, this is how the whole cascade goes. Here, histamine. This is the histamine, and this is here the acetylcholinergic, which acts on cholinergic receptors. That is, this will act on M3 receptor, and histamine will act on H2 receptor. And this is the parietal cell which contain potassium, like H plus K plus ATPase proton pump. So PPI inhibit this H plus K plus ATPase pump. Because of this, which the H plus जो ions है वो अंदर नहीं आएंगे. This H plus ions will not come inside. That is the lumen. Because of that, the acidity will not decrease. Why? Because the H plus ions will not come inside. So the H plus ion concentration, that is the acid concentration, will decrease. Fine. So but this is the last step. Okay, this is a cascade where PPS inhibit. This is the last step. PPS inhibit the last step of this cascade. We can also inhibit to prevent peptic ulcer. We can also show actions on anticonjugation, that is prevent binding of ACs to M3 or anti H2 blocker receptors. Okay, but and the good PPA shows a good effect, and it has shown the better we can prevent acidity or peptic ulcer by this H plus K plus ATPase proton pump inhibitor. Fine. So this was the mechanism of action. Here we can see that the PPS inhibit this pump, and this prevents the movement of the H plus ion from outside to inside, and because of this it will prevent the forming more concentrations of acid or H plus inside the stomach, and it will reduce the acidity. Because of that, peptic ulcer will also prevented. So let's move to the acid catalyzed activation of omeprazole. Like we have discussed earlier that कि omeprazole जो है न्यूट्रल पीएच में इनएक्टिव रहेगा, बट एसिडिक पीएच में वो एक्टिवेट होगा, राइट? तो उसको जो बट वो प्रोड्रग है, तो उसको एक्टिवेट करना है, तो उसका भी पूरा साइकिल है. लेट्स सी. So this is the omeprazole drug. Here we can see this is the pyridine ring, and this is the benzimidazole ring. Okay, so see, this is the lone pair of nitrogen of pyridine ring. This will attack on this carbon of the benzimidazole ring. Okay, so when this will attack this, the electrons of this pi bond electrons will shift to this nitrogen of benzimidazole ring, and the ring will get this will form the ring. See here, here the bond is formed between this nitrogen. Okay, after that, what happens is the lone pair on this nitrogen will get shifted to this bond, and this bond of the sulfur and this carbon will get broken down, and the electrons of this bond will shifted to sulfur, and the electrons on this oxygen will get of the double bond is shifted to oxygen. So we can see here that here is the this bond between the carbon and sulfur bond is broken down. Here we can see the double bond form, and the double bond O is going to get converted to OH. Fine. So now what will happen here? This nitrogen will get attacked to this sulfur atom, and this OH will get removed as water. Okay, so let's see here what has happened. The whole ring is formed. See, ये जो है ये यहाँ पे एक न्यू रिंग बनी है, और ये जो रिंग हमारी पहली न्यू बन गई थी. ये तो पहले से ये जो है न्यू रिंग बनी हमारी. फाइन. So NH2 हो गया. अभी this is the active form of the omeprazole drug. Okay. Now ये so this active form जो है वो जो ये जो सल्फर है अभी this is the active form, right? So the enzyme के पास enzymes में we know, right? Enzymes are made from amino acids, and amino acids contain cysteine also. Cysteine contain the SH group, right? Sulfur. So this sulfur will get bind to this with this sulfur,
and it will form the disulfide bond. Okay, see, this is the disulfide bond, and this bond of sulfur and nitrogen is broken. Okay, so they see यहाँ पे जो बॉन्ड है सल्फर और नाइट्रोजन के बीच का निकल गया है, and the bond, this disulfide bond has formed with this enzyme. Okay, so this is the this is irreversible bond. Okay, मतलब ये bond strong covalent बन गया, अब ये टूटेगा नहीं, ये this is the irreversible bond. Okay, so इसके लिए बोला है कि because of that it's shown that it irreversibly bind with the at pump. Okay, so this was the activation of the omeprazole drug. Fine. So we have seen the activation of omeprazole drug. Now let's move to the metabolism of omeprazole drug. So here we can see this is the structure of omeprazole drug, and let's see here, this is the CH3 group. Here metabolism hydroxylation will occur. Okay. So for this CH3, the hydroxylation occur with the enzyme say CYP2C19, and here we can see this is the S double bond O. So here the oxidation of this S double bond O occur with the enzyme CYP3A4. Fine. So now here is the CH3O. Okay, so the O demethylation. See here is either क्या O or CH3. Fine. So either O demethylation होगा with the help of enzyme 2C19, SIP 2C19. So ये मिथाइल निकल जाएगा. So we have seen तो मेटाबॉलिज्म के तीन मेन पाथवे है ओमेप्राजोल के. एक तो ये CH3 है, तो यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन होगा, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे डिमिथाइलेशन होगा. फाइन. So let's move to the next part, that is the adverse effects. So let's see, in adverse effects, the common adverse effects that are seen are nausea, loose stools, abdominal pain, and muscle and joint pain. Okay, here rarely seen में rashes, leukopenia, and hepatic dysfunctions. Okay, so these are the adverse effects where commonly seen are nausea, loose stools होंगे, abdominal pain and muscle and joint pain दिखेगा, and rarely में rashes, leukopenia, and hepatic dysfunctions will be there. Fine. So let's move to the interaction part. In interaction part, omeprazole inhibits the oxidation of certain drugs. Okay, interaction में क्या करेगा omeprazole और inhibit करता है certain drugs का oxidation, जैसे कि warfarin, phenytoin और diazepam का oxidation inhibit करेगा. So because of this, the concentration of these drugs will increase in the plasma, and this will cause toxicity. So omeprazole के साथ ये सारे drugs नहीं देने चाहिए. कौन से? warfarin, phenytoin and diazepam. Fine. So let's see the second interaction. Second interaction is clarithromycin inhibits omeprazole metabolism and increases plasma concentration. यहाँ पे क्या करता है? omeprazole inhibit करता है oxidation ये इन सारे drugs का, warfarin, phenytoin, diazepam का. बट क्लैरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट कर रहा है ओमेप्राजोल का मेटाबॉलिज्म, और ओमेप्राजोल का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज हो रहा है. फाइन. सो दिस वर द इंटरैक्शंस ऑफ ओमेप्राजोल ड्रग, एंड दिस वर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओमेप्राजोल ड्रग्स. ओके, लेट्स मूव टू द uses of omeprazole drugs. Okay, that is the PPAs. Omeprazole drug is a class of PPI drug, right? So PPAs are the drug of choice for peptic ulcer disease, gastroesophageal reflux disease, and Zollinger-Ellison syndrome. Okay, so we all know, right? Peptic ulcer disease में तो हम लोगों ने देख लिया कि PPI peptic ulcer disease में यूज होता है. Then gastroesophageal reflux disease में भी यूज होता है, जहाँ पे like food reverse आता है, यानी acid फिर से reverse आता है अपने gastrointestinal tract में, and that will cause irritation. So in that also we can use PPIs, because acid का secretion ही हम लोग कम करेंगे, right? तो acid आएगा ही नहीं return, ज्यादा होगा नहीं, तो इसलिए gastroesophageal reflux में भी हम लोग PPIs यूज करते हैं. Then we also use in Zollinger-Ellison syndrome में भी हम लोग PPIs यूज करते हैं. Fine. So this were then the PPI is the drug of choice for this diseases. Okay. So we have seen now the uses also. Let's see this is the marketed preparation of the omeprazole drug. The omeprazole occurs in tablets, capsules by various different companies. So this were the uses and the marketed formulations of the drugs. So let's move to today's last part of the session, that is the question.
So let's see. The proton pump inhibitors are most effective when they are given are. मीन्स क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब उसको हम कब देंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाएगा. लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट इज आफ्टर मील्स, सेकंड इज शॉर्टली बिफोर मील्स, third is along with H2 blocker, and the last is during prolonged fast period. Okay, so these are the options. हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम लोग पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं एसिड के सिक्रेशंस के रोकने के लिए, राइट. एंड एसिड व्हेन विल एसिड सीक्रेट, लाइक एसिड्स और एंजाइम्स विल सीक्रेट कब, जब हम लोग खाना खाने के पहले जो हमें डाइजेशन जरूरत है, राइट. So because for digestion the acids are released, but in the peptic ulcer disease condition the acid secretion is like in high amount. So to stop that we use PPAs. Okay, so when should we give the PPA? We should give PPA shortly before meals. खाने के थोड़ा टाइम पहले देना चाहिए. तो because of that the acid secretion will be less. Okay, so the effective, if we can see the if like effect when they are given shortly before meals. So PPI should be given shortly before meals to get the effective therapeutic effect of the PPIs. Fine. So this was the today's session. Thank you so much for joining with us. I hope you have enjoyed today's session, and let's meet for the new session again. So till then, stay safe and take care.